मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है दैट इज टॉपिक है आज फ्यूल्स। तो सब्जेक्ट है साइंस। तो इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 8th and 10th क्लासेस। 10th के लिए भी है और 8th के लिए भी ये टॉपिक है। अगर हम 8th स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो उनके सब्जेक्ट में, उनके साइंस सब्जेक्ट में एक यूनिट है दैट इज नोन एज कंबस्शन एंड फ्लेम। तो कंबस्शन एंड फ्लेम से मैंने ये टॉपिक लिया है। एंड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास उनके फिजिक्स पोर्शन में एक यूनिट है दैट इज नोन एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच बिलोंग्स टू द फिजिक्स पोर्शन, उसमें भी ये टॉपिक दिया गया है दैट इज फ्यूल्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यूल्स। बोथ द स्टूडेंट्स ऑफ 8th एंड स्टूडेंट्स ऑफ 10th इससे बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेंगे कि ये फ्यूल्स क्या होते हैं, फ्यूल्स क्या है, ठीक है ना। सो ए मटेरियल विच इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट दैट इज नोन एज फ्यूल। A material which is burnt means एक material which is burnt जिसको जलाया जाता है and after burning what it releases heat and that substance is known as fuel। उस substance को हम fuel बोलते हैं। Some of the common fuels, कुछ common fuels which we use in our daily life are, मिसाल के तौर पर हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, इन आवर डेली लाइफ में भी हम इस्तेमाल करते हैं। दैट इज कोल हम इस्तेमाल करते हैं। कोल, वी आर यूजिंग चारकोल, वी आर यूजिंग कोक, वी आर यूजिंग LPG, वी आर यूजिंग वुड, वी आर यूजिंग in addition to that we are using kerosene, we are using diesel, petrol, etc. These are known as fuels। इनको हम फ्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं। सो जहाँ तक फ्यूल्स का ताल्लुक है, फ्यूल इज ए गुड सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। मीन्स फ्यूल जो होते हैं दे आर गुड सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, गुड सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, गुड सोर्स ऑफ हीट एनर्जी मीन्स दे आर द गुड सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। ये जो फ्यूल्स है, दीज फ्यूल्स जो हम यूज करते हैं इन आवर डेली लाइफ में कैन बी इन 3 फॉर्म्स। ये 3 फॉर्म्स में हो सकते हैं। दे कैन बी इन 3 फॉर्म्स और इन अदर वर्ड्स वी कैन से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। हमारे पास जो फ्यूल्स है दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स और वी कैन से वी आर हैविंग 3 फॉर्म्स ऑफ फ्यूल्स। तो ये फॉर्म्स क्या है, चलो हम इनको देख लेते हैं। वी आर हैविंग सॉलिड fuels, we are having liquid fuels और हमारे पास gaseous fuels होते हैं which is also known as gaseous or we can say gaseous fuels, ठीक है ना। These are the 3 forms of fuels। तो जहाँ तक solid fuels का ताल्लुक है, हाँ, solid fuels में क्या क्या आता है, that is wood, that is charcoal which is in the form of solid state, those are known as solid fuels। We are having wood, we are having charcoal, we are having coal, etc. और liquid fuels में हमें क्या आता है, that is kerosene, petrol, diesel, etc. और gaseous fuels में हमें natural gas, biogas, petroleum gas, etc. So the fuels which we use in our daily life can be classified into 3 groups, that is solid fuels, that is liquid fuels and gaseous fuels। Solid fuels are those fuels which are in the form of solid state, liquid fuels are those fuels which are in the form of liquid state and gaseous fuels respectively in the gaseous state। तो अब हम देखेंगे what is the efficiency of a fuel, what is fuel efficiency, ये fuel efficiency क्या होता है। This is one of the important point, हाँ, this is one of the important point as per this chapter is concerned, that is combustion and flame and sources of energy for 10th class students। ये most important point है fuel efficiency and always ये examination में पूछा जाता है कि what do you mean by fuel efficiency। fuel
फ्यूल एफिशिएंसी। तो पहले हम देखेंगे फ्यूल एफिशिएंसी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्यूल एफिशिएंसी। हमें पता है ऑल द फ्यूल्स प्रोड्यूसेस हीट ऑन बर्निंग। तमाम फ्यूल्स जब बर्न हो जाते हैं ऑन बर्निंग दे प्रोड्यूसेस हीट। ये क्या हमें प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूसेस ऑन बर्निंग produces heat. So all fuels on burning produces heat. All the fuels do not produce the same amount of heat. जबकि तमाम fuels को अगर हम लेंगे वो burn हो जाएंगे, they will not produce the same heat. They will not produce the same heat. Say for example अगर हम पेट्रोलियम को जलाएंगे, केरोसिन को जलाएंगे, एलपीजी को जलाएंगे, श्योर सी बात है कि ये सब हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, बट दे विल नॉट प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। ये सेम अमाउंट ऑफ हीट नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या मेरे मेरे कहने का मतलब क्या है? मीन्स डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट। डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट amounts of heat। ये देंगे डिफरेंट फ्यूल जब बर्न होंगे they will produce different amounts of heat। they will produce different amounts of heat। ठीक है ना? तो अब ये क्या है? the amount of heat produced by the complete burning of 1 kilogram of a fuel, that is known as fuel efficiency, or we can say calorific value of a fuel। the amount of heat produced by complete burning of 1 kilogram। amount of, मैं शॉर्ट में यहां पे लिखूंगा heat, amount of heat produced by burning, amount of heat produced by complete burning, हम यहां पे लिखेंगे complete burning of 1 kilogram of a fuel is known as calorific value of a fuel। So calorific value of fuel efficiency क्या होती है? The amount of heat produced by complete burning of 1 kilogram। जब 1 किलोग्राम ऑफ ए फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इट विल लिबरेट, दैट इज नोन एज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, किसका? फ्यूल का बोलते हैं। ठीक है ना? सो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल को हम एक्सप्रेस किस तरह करेंगे? इन विच यूनिट इट इज एक्सप्रेस्ड? इसको किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है? सो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। इसको एक्सप्रेस हम करते हैं, कैलोरीफिक value of a fuel is expressed in kilojoules per kilogram। इसमें this is the unit in which calorific value of a fuel is expressed, that is kilojoules per kilogram। in a shortcut method we will written this kilojoules per kilogram। say here it is kilojoules, kg divided by per kilogram, kg। this is the unit of calorific value of a fuel। this is the unit in which we express the calorific value of a fuel। ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पे कुछ फ्यूल्स लेंगे, we will take some fuels। तो उनका कैलोरीफिक वैल्यू हम लिखेंगे, बाद में हमें वहां से पता चलेगा which one is the good fuel, इनमें से कौन सा गुड फ्यूल है। यहाँ पे हम लेते हैं जो हम मेजरली अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज वुड। वुड के अलावा कोल, पेट्रोल और हम एलपीजी को लेंगे। दीज आर फ्यूल्स। अब हम देखेंगे इनका सीवी कैलोरीफिक वैल्यू, इनका कैलोरीफिक वैल्यू कितना है। वुड, अगर इफ 1 kilogram of wood is completely burnt, आपको पता है कि how much amount of heat it will liberate? It will liberate 17,000
to 22,000 kilojoules per kilogram. If 1 kilogram of wood is completely burnt, it will liberate 17,000 to 22,000 kilojoules of heat energy. This is the calorific value of a wood. Now we will discuss the calorific value of a coal. We will take the calorific value of a coal. If 1 kilogram of calorific value is burnt, it will liberate 25,000 to 33,000 kilojoules per kilogram. Means coal is better fuel as compared to wood, because when 1 kilogram of coal is burnt, how much amount of energy is liberated? It liberates 25,000 to 33,000 kilojoules per kilogram heat energy. Wood, when 1 kilogram of wood is burnt, it liberates only 17,000 to 22,000. No, from this, if we will compare these two fuels, we can easily say that coal is better fuel as compared to the wood. Now we will take the calorific value of a petrol. So calorific value of a petrol is 45,000 kilojoules per kilogram. So we can say it is much better as compared to coal and wood. Now take the example of LPG, which is known as liquefied petroleum gas, which we use in our homes, जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं. LPG को देख लेंगे. What is the calorific value of LPG? So LPG, the calorific value of LPG is 55,000 kilojoules per kilogram. Means it is better fuel as compared to petrol, coal, and wood. So what are the characteristics? Now, what are the characteristics of an ideal fuel और गुड फ्यूल? अब हम देखेंगे जो ये गुड फ्यूल होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, द फर्स्ट वन इज दैट इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू. इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए. हाई calorific value. High calorific value means high calorific means it should produce large amount of heat on burning. If it produces large amount of heat on burning, means it have high calorific value. We can classify it in the group that is good fuels. हम इसको ये बोल सकते हैं कि it is a good fuel. So good fuel की पहली निशानी ये होती है, it is having high calorific value. ठीक है ना? Means it produces large amount of heat. Number second, it burns easily. जो good fuel होता है, it burns easily. ये easily burn हो जाता है. ठीक है ना? This is also a characteristic feature of good fuel, that is it burns easily. The third one is it should have proper ignition temperature. Proper ignition temperature means neither it should be very high भी नहीं होना चाहिए, nor very low, ज़्यादा low भी नहीं होना चाहिए. इसका ignition temperature means it should have proper ignition temperature. Now what is ignition temperature? यहाँ पे ignition temperature term आई, हम इसको पहले define करेंगे. Ignition temperature is that temperature at which a substance catches fire. वो temperature जहाँ पे एक substance, एक fuel catch fire करेगा, that is known as ignition temperature. तो characteristics of a good fuel में ये point भी आता है. Those fuels who are having proper ignition temperature means इनका ignition temperature that should not be very high, वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, that should not be very low, वो कम भी नहीं होना चाहिए. तब जाके हम कहेंगे कि it is the characteristic feature of an good fuel. Means it should have proper ignition temperature. The fourth one is it does not produce any harmful gases. Does not produce any harmful gases. जब ये burn हो जाएंगे, it should not produce any harmful gases or ashes. ये इन चीजों को produce नहीं करना चाहिए. If it produces harmful gases, then we cannot say it is a good fuel. ठीक है ना? The last point of the characteristics of a good fuel is it should be cheap. ये सस्ता होना चाहिए.
इजीली अवेलेबल, हर एक जगह अवेलेबल होना चाहिए, चीप, सस्ता, इजीली अवेलेबल, और इसके अलावा इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट, easy to transport. These are some of the characteristic फीचर्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। होप ये आप सब लोगों को समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी यूनिट, दैट इज कंबस्शन एंड फ्लेम। कंबस्शन एंड फ्लेम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें हम नया टॉपिक दैट इज कंबस्शन, इट्स टाइप्स, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स।